The order जितना जो गरीबों के लिए खाद्यान्न है वो गरीबों तक पहुंचता नहीं और रसूखदारों के यहाँ जमा हो जाता है। ये पूरा का पूरा जितना गबन होता है ना, ये हम लोगों के पैसे के ऊपर होता है। हमारी तो तनख्वाह से 1 तारीख को इनकम टैक्स कट जाता है। आप क्या चाह रही थी कि वो आपका जवाब लेकर बैठे रहते 3 महीने फिर डिसाइड करते? कहाँ लिखा है आपने कि आपको इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी चाहिए? petitioner was working as salesman in government public distribution shop. जी He received a show cause notice on 31/12/2022, जी to which he submitted a reply on 10/1/23, my lords. जी My lords, immediately thereafter, on 19/1/23, without giving him any opportunity to examine the witness जी or providing any inquiry report to him, जी a order was passed by SDO, my lords, on 19/1/23, यस to which the present petitioner, my lords, appealed before the upper collector, जी and the upper collector passed an order, Annexure P6, my lords, on 31/5/2023, जी which is not a speaking order, my lords. Kindly see page number 46, Annexure P6. My lords, the क्या शॉर्टेज पाई गई? yes, my शॉर्टेज के ऊपर से उन्होंने कार्रवाई करने का नहीं। निर्देश दिया। 52 lords. फिर क्या गलत है इस ऑर्डर में? My lords, the appeal which I have, the appeal, so my lords, first of all, before the SDO, I was not given the opportunity, I was not provided the inquiry report, my lords, for which I filed an application which is Annexure P3, my lords. और उसके पहले पेज 17 पढ़िएगा। उपरोक्त संबंध में पूर्व विक्रेता श्री कृपाल खरे तत्कालीन विक्रेता को नोटिस जारी कर इस न्यायालय में आहूत किया गया। कृपाल खरे तत्कालीन विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान आमगांव बिहार द्वारा अपने जवाब पर उल्लेख किया कि इतने को मेरे द्वारा वर्तमान विक्रेता चैनलाल केनार को सही स्कंद पंजी पूर्ण मिलान कर प्रभार दिया जा चुका है। My lords, 16/1/2020 को मेरे द्वारा पूरा प्रभार दिया जा चुका था। जी फिर उसके अगले पैरा में पीओएस मशीन स्टॉक में पाए गए अंतर के संबंध में दोनों विक्रेताओं को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः निरीक्षण में पाए गए स्टॉक अंतर के संबंध में पूर्व विक्रेता एवं वर्तमान विक्रेता से एक समान वसूली आदेशित किया जाता है। क्या गलत है इसमें? My lords, on 10/1/23 I filed my reply, and on 19/1/23, my lords, the SDO has passed his order. हाँ तो क्या करते हो आपके My 9 lords, दिन पर्याप्त होते हैं my lords, डिसाइड करने के लिए? आप क्या चाह रही थी कि वो आपका जवाब लेकर बैठे रहते 3 महीने फिर डिसाइड करते? my lords, inquiry report could have been provided to me, my lords. आपने कहाँ मांगी है इंक्वायरी रिपोर्ट, ये तो बताइए। ये पूरा का पूरा जितना गबन होता है ना, ये हम लोगों के पैसे के ऊपर होता है। हमारी तो तनख्वाह से 1 तारीख को इनकम टैक्स कट जाता है। My lords. My lords, if we see to the ये order, जितना जो गरीबों के लिए खाद्यान्न है वो गरीबों तक पहुंचता नहीं और रसूखदारों के यहाँ जमा हो जाता है। कहाँ लिखा है आपने कि आपको इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी चाहिए? my lords, point number 4, पेज नंबर page number 16, my lords. पेज नंबर 16 पढ़िए, क्या लिखा है इसमें? पॉइंट नंबर 4। Yes, मैं चाहे गए अभिलेख का उल्लेख हाँ न्यायालय अधिकारी रा बैयर रा प्रकरण क्रमांक 3526 बैयर स वीप्र 223 उक्त प्रकरण में शिकायत जांच प्रतिवेदन आदेश संपूर्ण ये आवेदन पत्र कब दिया गया है? 22 my lords, after the press. आफ्टर पासिंग ऑफ दैट ऑर्डर 22/2/2023 को दिया गया है। Yes, my lords. आदेश 19/1/23 का है। Yes. आपने जब अपना उत्तर दिया था शो कॉज नोटिस का, तो उसमें आपने लिखा था कि आपको इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी चाहिए। My पेज lords, 14 पर पढ़िएगा, पेज 14 पर आपका उत्तर है, अनुभागीय अधिकारी राजस्व को। आपने इसमें कहीं पर भी लिखा कि आपको जो है इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी चाहिए? no, my lords. My lords, Then- but when I went before the upper collector, my lords, Uh-huh. I have raised this ground that I was not given the inquiry You report. can raise only that ground for which you had agitated before the authority in the first instance. Anything else? लिखिएगा। Miss Priyal Rang Dale, learned counsel for the petitioner. This petition is filed being aggrieved of a order dated 19/1/2023 passed by the sub-divisional officer within bracket revenue
bracket close, Bihar district Balaghat, ordering recovery of of shortage of food grains in terms of the provisions contained in clause 11 within bracket 4 and clause 13 within bracket 2 of the Madhya Pradesh Public Distribution System Control Order 2015 and directing recovery of the shortage in equal proportion from the petitioner and another salesman of the shop. Full stop. It is submitted that this order was put to challenge before the learned additional collector Balaghat, but while order dated 31/5/2023 without adverting to the defense raised by the petitioner that he was never supplied copy of the inquiry report, impugned order has been passed. Thus, these orders have been termed to be cryptic, and it is prayed that these orders be quashed. Next para. After hearing learned counsel for the petitioner and going through the record, it is evident that petitioner was issued a show cause notice. He was given an opportunity of hearing. His reply as contained in Annexure P2 dated 10/1/2023 was considered by the subdivisional officer. Full stop. In his reply, he never raised a plea of providing copy of the inquiry report. Full stop. It has also come on record that for the first time request was made on 22/2/2023. That is after decision was taken by the subdivisional officer. Full stop. Thus, it is evident that petitioner was given opportunity of hearing. He had filed his reply that was considered by the subdivisional officer before passing of the impugned order, and petitioner since could not explain the shortfall in the stock of food grains, impugned order imposing recovery is passed, which cannot be said to be illegal or arbitrary or in violation of principles of natural justice. Impugned orders having been passed after following due process prescribed in law does not call for interference. Petition fails and is dismissed. My lords, I would like to raise one point, my lords, that my ground that the charge of public distributing of my charge was given to the. At this stage, Ms. Priyal Rangdale submits that this ground is not considered by the authorities below, that he had already given charge in favor of his salesman, namely Chen Lal Kenar. Full stop. Next para. However, this aspect has been considered by the subdivisional officer, and he has clearly mentioned that petitioner could not explain the difference in the stocks in the POS machine while handing over charge to Chenlal Kenar, and since that difference could not be reconciled, therefore recovery has been imposed both on Chenlal Kenar as well as the petitioner. यही बोल रही थी ना आप? Yes, चलिए. name of my senior maybe. नहीं, ये आप मेरे कोर्ट में बहस मत किया करिए. जो आएगा उसका नाम रिफ्लेक्ट किया जाएगा. आपने पास ओवर लिया था, हमने आपको मना नहीं किया. पास ओवर में भी अगर आपके सीनियर नहीं आ सकते तो उनका नाम